Hello, my tiny tots. How are you doing today? I hope you're doing fine and taking good care of yourself because it's very cold outside. So stay at your home and watch all my videos. So welcome back to Learn Forward from Hi Kids by the Cap. Now we will start our today's chapter that is about modes of transport. Do you know what is the transport? Transports are the vehicle that helps us to move from one place to another. ट्रांसपोर्ट्स क्या होते हैं? व्हीकल्स होते हैं जो हमारी हेल्प करते हैं हमें वन प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाने में. ठीक है, अब वो कौन कौन से मोड्स होते हैं that I will tell you. Let's start at this class. Okay, so there are three types of modes in transport. That is, one is land, air, and water. Okay, first we will learn about land transport. So first one is the car. Car is land transport because car कहाँ चलती है? रोड पे चलती है. Okay, so car is a land transport. Next is scooter. Scooter also drives on road. This is also a land transport. Next is the bus. बस भी बड़ी होती है जहाँ पे बहुत सारे लोग साथ में ट्रैवल करते हैं. ओके, सो बस इज ऑल्सो अ लैंड ट्रांसपोर्ट. नेक्स्ट इज ट्रेन. ट्रेन में तो बहुत सारे लोग एक साथ ट्रैवल करते हैं और ट्रेन बहुत फास्ट मूव करती है ना. तो ट्रेन इज ऑल्सो अ लैंड ट्रांसपोर्ट. ओके, सो ऑल दीज थिंग्स आर लैंड ट्रांसपोर्ट जो लैंड पे ट्रैवल करते हैं. नेक्स्ट कम्स एयर ट्रांसपोर्ट जो एयर में फ्लाई करते हैं. ओके, फर्स्ट वन इज एरोप्लेन. एरोप्लेन इज वेरी बिग इन साइज एंड उसमें भी बहुत सारे लोग साथ में ट्रैवल कर सकते हैं. तो हमें बहुत दूर कहीं जाना होता है किसी दूसरे स्टेट में या दूसरी कंट्री में, देन वी यूज दिस एरोप्लेन. ओके, नेक्स्ट इज हेलीकॉप्टर. हेलीकॉप्टर में बहुत सारे लोग साथ में ट्रैवल नहीं कर सकते हैं. ओनली 2 to 3 people can travel. Okay, next is rocket. Rocket में हम लोग ट्रैवल नहीं कर सकते हैं बट रॉकेट इज ऑल्सो अ ट्रांसपोर्ट. साइंटिस्ट ट्रैवल करते हैं जब उन्हें ऊपर स्पेस में जाना होता है. ठीक है, सन, मून, स्टार्स के पास. तो कैसे ट्रैवल करते हैं? थ्रू रॉकेट. ओके, नेक्स्ट इज ग्लाइडर. दिस इज ऑल्सो अ एयर ट्रांसपोर्ट. ये भी एयर में फ्लाई करता है. नेक्स्ट कम्स वाटर ट्रांसपोर्ट. वाटर ट्रांसपोर्ट. फर्स्ट वन इज शिप. तो ये कहाँ पे ट्रैवल करते हैं? वाटर में. ठीक है, फर्स्ट वन इज शिप. शिप में भी बहुत सारे लोग साथ में ट्रैवल कर सकते हैं. नेक्स्ट इज राफ्ट. हैव यू ऑल डन राफ्टिंग? नो, बिकॉज यू आर किड्स. So rafting is very famous in Rishikesh. Okay, this is done for fun. This is a fun activity. It is done in the water. Next is boating. Boating में भी only 2 to 3 people can travel. Okay, and the last one is yacht. Last one is yacht. It is a water transport. So all these things are water transport. Okay. So there are 3 modes of transport. First one is land, air and water. Okay. So now tell me, how do you travel on your daily life? आप कैसे travel करते हैं? Land, air या water में? I travel by land transport because in daily life, daily हम कैसे करते हैं travel? Land से. Either we use a car or a scooter or a bus. राइट. जब हमें जाना होता है किसी स्कूल में तो हम कैसे ट्रैवल करते हैं? हम कार में जाते हैं या फिर हमारी स्कूल बस आती है ना. अगर सपोज हमें जाना है शॉपिंग मॉल, वी विल गो बाय अ कार. राइट. सो ऑल दीज थिंग्स आर यूज्ड इन आवर डेली लाइफ. लैंड ट्रांसपोर्ट आप डेली यूज करते हैं. ओके, एंड एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट हम कभी कभी यूज करते हैं जब हमें कहीं बाहर बहुत दूर जाना होता है. ऑलराइट. ओके, नाउ देयर इज अ एक्टिविटी फॉर यू ऑल एंड दैट इज पेस्ट द स्टिकर्स ऑफ लैंड, वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्ट in the correct boxes. You have to paste their stickers.
आपको लैंड, वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्ट के स्टिकर्स करेक्ट बॉक्सेस में पेस्ट करने हैं. ओके, this activity you will do with the help of your mother at your home. All right. Okay, class, that's it for today. I hope you have understood this chapter about modes of transport. There are 3 modes: land, air and water. Very good. Now I will see you in the next class. Till then, happy learning. Bye bye. Take care.